first thing. Someone is unmuted. Please mute yourself. So we have to talk about the cardiac output. Cardiac output. So what is the cardiac output? Your cardiac cycle. That means जब भी हमारा circle cardiac cycle perform होता है तो कितना amount of blood जो होता है that is being released out from the heart. So the amount of blood pumped by the heart per minute is known as cardiac output. Amount of blood released होता है from the heart. हर cycle में जितना भी release होता है that is your cardiac output. The amount of blood pumped by heart. Amount of blood pumped by heart per minute is known as cardiac output, or in the other word you can also say heart output. Your cardiac output depends upon two important factors. Your cardiac output depends upon two important factors. One is the heartbeat, the number of heartbeat per minute, number of heartbeat per minute, and the stroke volume. दो चीजें, two factors. Listen carefully, बहुत अच्छे से समझ में आएगा. Two factors on which cardiac output depends. One is your heartbeat, the rate of heartbeat, and the second is your stroke volume. That means the amount of blood that is forced by each ventricle during the cardiac cycle. So basically, you know that pump out every जब जितनी बार भी हमारा ventricle systole होता है, so the amount of blood that is being pushed out by through the pulmonary artery by the ventricle is 70 ml of blood. It ranges from 70 to 80. But normally, in a normal healthy person, it's 70 ml of blood. That is your stroke volume. So your stroke volume is 70 ml. And the heartbeat of a normal healthy human being is 72 per minute. Is it? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So now, how we calculate the cardiac output? अभी मैं इससे related एक numerical दूंगी. Cardiac output will be equal to your heartbeat, that is 72 per minute, और हर बार कितने amount of stroke volume blood release हो रहा है, that is your 70. अभी बताओ कितना होगा? Multiply it. 5040 ml? Yes or no? Yes, ma'am. Yes. So 5040 ml per minute. So it's near about, आप बोल सकते हो, it's near about 5 liter of blood. That means about 5 liter of blood per minute is being pumped to from the heart. So which is equivalent to the total blood volume. थोड़ा सा
रिमेनिंग पे रहता है, जैसे जब भी आप एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ोगे वहां पे भी पढ़ोगे कि द सम, जैसे आपने रेस्पिरेशन अभी अगर नहीं पढ़ा है तो वहां पे भी देखोगे कि रेसिडुअल वॉल्यूम थोड़ा सा बचा हुआ रहता है. सो इट्स नोन एज, अगर मैं इसको 5 लीटर बोल सकती हूँ तो इट on an average 5 to 5.5 liter of blood in a normal healthy human being. So it comes from the cardiac output. And what are the two factors on which this cardiac output depends? It depends upon two factors, that is your heartbeat and your stroke volume. दो चीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, क्योंकि हर बीट के साथ, हर हार्ट बीट के साथ कितना वॉल्यूम ऑफ ब्लड रिलीज होता है, दैट इज योर स्ट्रोक वॉल्यूम. ऐसे लिख लो, अमाउंट ऑफ ब्लड रिलीज्ड in each beat. Released in each beat. There is a question I'll just share with you all. See the question. Just I'm sharing here the question. ये क्वेश्चन हमारे किसी ईयर तो आया है, अभी हाल फिलहाल के ईयर में ही आया है, 2016 या 2017 नीट का क्वेश्चन है. ये तो नहीं है, जस्ट अ मिनट. ये देखो, तुम पहले सेकंड वाला करो, अभी फर्स्ट वाला तुम लोग नहीं करोगे क्योंकि वो अभी शायद नहीं बनाया है, मैंने पढ़ाया है. सेकंड क्वेश्चन देखो, इन अ कार्डियक आउटपुट, जस्ट अ मिनट. The question is, in a cardiac output, इतने सारे ऐप अपने आप खुल जाते हैं ना बीच में कि पूछो ही मत. In a cardiac output of 5250 ml per minute. चलो मैं क्वेश्चन लिख ही देती हूँ. ये क्वेश्चन आया हुआ है नीट 2016 या 17 का क्वेश्चन है. इन अ कार्डियक आउटपुट क्वेश्चन, इन अ cardiac output of 5250 ml per minute with 75 heartbeats per minute. The stroke volume is, क्योंकि जनरली योर स्ट्रोक वॉल्यूम रेंजेस फ्रॉम, अगर हम किसी एथलीट की बात करते हैं तो उसमें डेफिनेटली 70 से थोड़ा ज्यादा होता है, तो इट रेंजेस बिटवीन 70 to 80 ml. So in this question you have to find the stroke volume. In a cardiac output of 5250 ml per minute with 75 heartbeats per minute, the stroke volume is, find it. 70 ml. 70 ml. 70 ml. Okay, very good. So this is how the question will appear in the exam. ठीक है, एक और क्वेश्चन है यहाँ पर जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया था, बट वो आगे थोड़ा सा पढ़ाने के बाद. कैसे कैलकुलेट किया आपने, सबको समझ में आया या कोई है जिससे नहीं हुआ? You know that the cardiac output is equal to heart rate into stroke volume. You have to find the stroke volume. Stroke volume will be cardiac output divided by heart rate. That means your 5250 divided by 75. Okay, and you will get the stroke volume. Clear, everyone? Yes. Now Yes, here, ma'am. I will ask one more question to you.
Is there any difference between heartbeat and pulse rate? What is heartbeat and pulse rate? Is they are same or they are different? This is the question. Think over it. कौन बताएगा? Mayur? Ma'am, heartbeat is the cause of pulse rate. Yes, I'm not getting you. Pardon, please. Heartbeat causes pulse rate. Heartbeat causes pulse rate. Absolutely correct. But if you have to explain a layman what is heartbeat and what is pulse rate, so your heartbeat is the rhythmic contraction and relaxation of your heart, but your pulse is the contraction of the main aorta or the arteries. जितने बार एरोटा से ब्लड फ्लो होगा उतनी बार आपका पल्स रेट आपको दिखता है कि वो कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, रिलैक्स हो रहा है. So that is your pulse rate. So your pulse rate is the rhythmic contraction and relaxation in aorta and its main artery. But your heart rate is the contraction and relaxation of the heart. और इसी वजह से हम radial arteries, जहां पर arteries superficially present रहते हैं, वहां से हम pulse rate count करते हैं. You can also count from the neck के पास से भी कर सकते हैं. तो it depends. तो there is a difference. Pulse का मतलब होता है contraction and relaxation of the main aorta and the arteries. But heart rate का मतलब होता है it's the contraction and relaxation of the heart. Yes, definitely. अभी आपने बताया that is absolutely correct. Your pulse rate depends upon the heart rate. और इसी वजह से हमारा pulse rate भी 72 per minute होता है because it's equal to the heart rate. But another difference between heartbeat and pulse rate is that your heartbeat is also controlled by the hormones and the neural regulation. कल ही हमने पढ़ा है, but it's not related to the pulse rate. Pulse rate में ऐसा कुछ नहीं होता है. जितनी बार आपके blood flow करेगा हार्ट से बाहर through the main aorta, उतनी बार हमारा arteries जो है उसमें contraction and relaxation होगा. Okay? Although the number is same. Okay? Ma'am, Yes, बच्चा. ma'am, can you please explain the stroke volume again? Stroke volume again. Okay. So basically, stroke volume क्या होता है? Stroke volume is the volume of the blood that is pumped through the ventricles, through the left ventricle every time it contracts. जैसे ही वो contract करता है, वो blood किसको देता है? Main aorta को. तो जितनी टाइम, क्योंकि वो 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है इन अ होल एक बार, मतलब 72 टाइम्स होता है ना इन 1 मिनट, तो 1 मिनट में वो 72 टाइम्स कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है. यस और नो? वेंट्रिकल. Yes, ma'am. जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो 70 ml ब्लड पंप कर रहा है. तो कार्डियक आउटपुट क्या हो जाएगा? 70 ml वन टाइम पे हो रहा है, लेकिन वो कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट करता है इन 1 मिनट? दैट इज योर हार्ट रेट, दैट इज योर 72. सो 72 into 70. ये डिटरमाइन किया गया है बाय द वेरियस एक्सपेरिमेंट्स दैट योर स्ट्रोक वॉल्यूम ranges from 70 to 80 ml. Your stroke volume ranges from 70 to 80 ml. But in a normal resting healthy human being, it's 70 ml. But if you will talk about the athletes, definitely उसके जो stroke volume होता है वो हमसे थोड़ा सा ज्यादा होता है, because it depends upon two factors. Stroke volume पे भी depend कर रहा है हमारा cardiac output as well as the heartbeat पे भी कर रहा है. उनका heartbeat भी हमसे तेज होता है क्योंकि वो fast exercise कर रहे हैं, activity कर रहे हैं. So if the question comes, ये भी question आता है, this is also important. कि आपका कार्डियक आउटपुट जो है वो कौन से दो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करता है. अब समझ में आ गया सबको क्लियरली? Yes, ma'am. Yes, ma'am. क्वेश्चन भी साथ में नोट कर लो ताकि जब भी आप रिवाइज करने बैठो, जब इसको डिवाइड करोगे तो 70 ml तुम लोगों ने ही बताया है, मैंने लिख दिया. ठीक है, डिवाइड करके देख लेना. ओके, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द डिफरेंसेस बिटवीन द हार्ट बीट एंड पल्स. तो पल्स जो है वो हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन पे नहीं डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है मेन एरोटा एंड द आर्टरीज के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन पे. बट डेफिनेटली योर पल्स इज रिलेटेड टू योर हार्ट बीट. ओके,
चलो अभी हम आगे बढ़ते हैं और अब हमें हार्ट साउंड्स के बारे में पढ़ना है. दैट वी विल रीड एंड आफ्टर दैट वी विल रीड इन डिटेल अबाउट द कार्डियक साइकिल. लेट मी रब द बोर्ड. Excuse me, ma'am. Yes, बच्चा. Can you repeat the definition of pulse rate? Yes, pulse rate is the rhythmic contraction and relaxation in aorta and main arteries. Rhythmic contraction and relaxation or in aorta and main arteries. Aorta और main arteries में जो contraction और relaxation होता है वो हम pulse के through measure करते हैं. It's not related to the heart rate. Okay. Yes, your cardiac output is variable and it's vary in different individuals because it depends upon two factors which can be varied. क्योंकि जब भी हमने हार्ट बीट पढ़ा था कल तो हमने देखा था yes the heartbeat is also variable in different individuals. The smaller the animals, the higher the rate of the heartbeat. Larger the animal, the rate of the heartbeat is low. So ये दो important factors पे depend करता है. So if the stroke volume also changes, your cardiac output will change. If the heartbeat changes, it also changes. You can see here. Here the stroke volume is same 70 ml, but the heartbeat per minute is changed. That is 75. So your cardiac outputs also changed. Clear हो सकता है. तो mind it ये कोई question आता है. तो note it down कि your cardiac output can be variable. Another question. वो अगर 2016 का था तो ये 2017 या 18 का था. The both questions comes recently in your NEET examination. What would be the heartbeat? What would be the heart rate of a person if the cardiac output is 5 liter? Blood volume Upper side is not visible. blood volume in the ventricles at the end of diastole is 100 ml and at the end of ventricle systole is 50 ml. ये अभी मैंने आपको नहीं कराया है बट आज हम ये क्वेश्चन भी करेंगे. इसको इधर हम लीव कर देते हैं. आगे की चीजें जो अभी हम पढ़ने वाले हैं उससे हमें समझ में आ जाएगा. यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको डायस्टोल का वॉल्यूम दिया हुआ है 100 ml and at the end of ventricular systole is 50 ml and now you have to calculate the blood volume. So how you will calculate this question? Actually what happens जब भी हम cardiac cycle पढ़ेंगे तो there we read about the 4 stages. The atria that also undergo systole, then the atria also undergo relaxation stage, that is our diastole. Your ventricle also undergo systolic reaction and the diastole. So here the volume of the blood in the ventricles at the end of diastole. Diastole का मतलब हमेशा होता है relaxation and systole का मतलब होता है your contraction. Both the volumes are given here. So you have to find what you have to find? You have to find the heart rate. So either in order to find the heart rate, you should know 2 things. One is the cardiac output and the stroke volume. तभी हम heart rate निकाल सकते हैं. Yes or no?
Yes, ma'am. Yes. So by this you have to find the stroke volume. तो stroke volume क्या होगा? जब भी वो relaxed position में है तभी उसके पास 100 ml blood है, but at the end of systole जब भी वो contract हो गया तो उसके पास 50 ml blood है. अगर 50 ml blood है तो उसने 50 ml blood जो है वो release कर दिया. Is it yes or no? कौन बताएगा yes or no? Yes, ma'am. So how you will calculate? फटाफट calculate करो. First you have to find the stroke volume. अभी मुझे आंसर किसने दिया? Praveen Sirsad, ma'am. Okay. So first you have to calculate the stroke volume. How you will calculate the stroke volume? अगर पहले से मेरे पास 100 रुपीस थी और 100 रुपीस अभी भी बचा हुआ है तो मैंने कितना दे दिया किसी को? 50? क्योंकि 100 ml उसके पास पहले से ब्लड था डायस्टोलिक स्टेज में, रिलैक्स्ड स्टेज में. अभी वहां से जब वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, एंड एट द एंड ऑफ वेंट्रिकल सिस्टोल इज 50 ml. 50 ml अभी भी बचा हुआ है तो दिया कितना? 50 ml? Yes or no? So that the stroke volume that is released by the ventricles to the aorta by each heartbeat is your 50 ml. Clear? Yes, ma'am. Now calculate. मैंने बोला कि अगर आपको कार्डियक आउटपुट पता है तो in order to find the heart rate you should know the stroke volume. So these things are given in order to get the stroke volume. So your stroke volume is 50 ml per beat. 50 ml per beat. So your cardiac output is equal to heart rate into stroke volume. Now you have to find the heart rate. So your heart rate is equal to cardiac output divided by stroke volume. So your cardiac output is 5 liter by your stroke volume 50 ml. अब लीटर को ml में चेंज करना जरूरी था, या तो आप इसको भी चेंज कर सकते थे, या तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम जो 50 ml है उसको लीटर में चेंज कर लो, क्योंकि एक आपका लीटर में है और दूसरा आप ml में नहीं ले सकते हो, तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो, या तो आप स्ट्रोक वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर लो. So this with this goes and it's the 100 beats per minute. अब समझ में आ गया? And upper side is not visible. Upper side is not visible. Yes, ma'am. Okay. Now see. I'm writing. ये हमारा second question था. Now we will doing the third question. Question आते हैं इस टाइप के इस चैप्टर से, इसलिए मैं करवा रही हूँ. So the third question is, what would be the cardiac output of a person? What would be the cardiac output of a person? What would be the cardiac output of a person having 72 beats per minute and a stroke volume of 50 ml. Find it out. 3,600. Very good. 3,600. 3600 ml. 3600 ml.
सो बेसिकली यहाँ पर आपको कार्डियक आउटपुट निकालना है, तो ये बहुत इजी है क्योंकि कार्डियक आउटपुट यू नो कि कार्डियक आउटपुट विल बी इक्वल टू योर heartbeat 72 into 50 and you will get 3600 ml. ठीक है, तो this will be the answer of the cardiac output. Note these questions. तो मैं बोर्ड रब कर. Now we have to learn in detail about the heart sound. In a normal healthy human being, with each heartbeat, two types of sounds are produced. Two sounds are produced per heartbeat. Two sounds are produced per heartbeat. One is known as lub and the other is known as dub. Lub and dub. These are the two types of the heart sound which is produced by the heartbeat. जब भी हार्ट बीट करता है ये दो डिफरेंट टाइप्स के हार्ट साउंड प्रोड्यूस्ड होते हैं. ओके, सो फर्स्ट वी विल रीड इट अबाउट द लब. व्हाट इज दिस लब? तो बेसिकली लब जो होता है, बहुत सारे बुक्स में आपको डबल बी भी लिखा हुआ मिलेगा. ठीक है, तो LUB भी लिख सकते हो या फिर LUBB भी लिख सकते हो. बोथ आर सेम. लब डब, लब डब ऐसा साउंड होता है. अभी जो अभी सबसे तो हमें इंडियन मूवीज में बताया है धक धक, ऐसा कुछ नहीं होता है. इट्स द लब एंड द dub. These are the two sounds which is produced by the heart. Lub and dub. ठीक है, so basically what is lub? This sound is produced by the closure of the atrioventricular valves. That means by the closure of the tricuspid and the bicuspid valves. जैसे ये दोनों valves बंद होते हैं तो इन valves के बंद होने की वजह से एक sound produced होता है and that sound is known as lub, which is the first heart sound. Your lub is the first heart sound. Okay, lub is the first heart sound and it's produced by the closure of tricuspid and bicuspid valve. Produced, the first thing is first heart sound. The second is produced by the closure of tricuspid and bicuspid valve. ये बात भी करते हैं, पहले ये कर लेते तो ये मैं भी इसको यहाँ से हटा दें. This sound is also known as the sound which is produced due to the contraction. This sound, it is also known as contraction phase. जब ये sound produced होता है तो this phase shows the contraction phase. वो जब अभी मैं कार्डियक साइकिल आपको पढ़ाऊंगी तो अभी समझ में आ जाएगा कि किस स्टेज पे ये दोनों वाल्व्स बंद हो रहे हैं. तो this stage also shows contraction phase. Shows contraction phase. Another important thing that you have to remember, और जिससे क्वेश्चन आते ही आते, what is the duration और इसकी पिच कैसी होती है. तो the duration of the first heart sound is greater as compared to the second heart sound
but the pitch of that is the frequency of the first heart sound is low. So basically it is weak sound but for a longer duration. It is a weak sound मतलब इसका frequency जो है वो कम है, weak sound and longer duration. वीक साउंड तो है बट फॉर लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम अगर क्वेश्चन आता है कि विच साउंड इज प्रोड्यूस्ड which has a longer duration but the frequency is low, so the frequency of the lub is your 25 to 45 hertz, but the seconds for which this is produced is 0.15 seconds. 0.15 second के लिए हमें सुनने के लिए मिलता है and the frequency is 25 to 45 hertz. So the frequency is low, इसी वजह से हम इसको weak बोल रहे हैं, but जब भी हम second heart sound पढ़ते हैं उसको बोलते हैं louder and sharper as compared to the first heart sound, but they are for a smaller duration as compared What to is the frequency? 25 to 45 hertz. 25 to 45 hertz. This is the frequency. I will write here. Frequency. Okay. So this is all about your lub. That is the first heart sound. After the first heart sound, we have to learn about the second heart sound. That is your lub. So the two sounds are the lub and the dub. Dub बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं, and with the help of the stethoscope you are going to hear about this song. ठीक है? The second heart sound is dub. Lub and dub. कोई मुझसे ये मत पूछना कि मैम हमारे बुकलेट में LDUP लिखा है, इट्स द डब होता है बच्चा, डब नहीं होता, लब डब ये आवाज आती है. एंड समटाइम्स द डिफेक्टिव हार्ट साउंड इज मरमर. The doctor used their stethoscope in order to hear the heart sound. I hope soon you all will wear your stethoscope and I'll be more than happier. सब डॉक्टर्स बन जाओगे, बहुत खुशी होगी मुझे. एंड विद द हेल्प ऑफ द स्टेथोस्कोप दे हियर द साउंड. अगर वो, क्योंकि इसका एक इंटरवल है कि इतने सेकंड्स पे ये आवाज आनी चाहिए, और अगर वो सही है इसका मतलब कि आपका हार्ट की फंक्शनिंग जो है वो नॉर्मल है. बट ड्यू टू सर्टेन defects in the valves, अगर valves की closure अच्छे से नहीं हो रही है, there is certain defects, then they produced another sound, abnormal sound, that is murmur. ये नहीं कहता कि मर जाओ, but the sound name is murmur. Okay, so first we will learn about the dub. So dub is the second heart sound. ये second heart sound है and it is produced by the closure of the semilunar valve, that is pulmonary semilunar valve as well as the aortic semilunar valves. So the second heart sound, that is the dub, is produced by the closure of semilunar valves. Produced by the closure of semi-lunar valves. Produced by the closure of semi-lunar valves. Okay? जैसे यहाँ पर मैंने बोला था, it shows the contraction phase, it shows the relaxation phase. The second heart sound is, ये slow था, weak sound था, but it's sharper and louder. The second heart sound is sharper and louder. It is sharper, louder,
and for low duration, but time is low. बहुत ज़्यादा का difference नहीं है बच्चा. Here you have seen 0.15 second. Here I will write 0.12 second. But they are sharper and louder. That means they have a higher frequency as compared to your weak sound, जो 25 to 45 hertz को vary करता है. Your these sharper and louder, they have a frequency of 50 hertz. They have a frequency of 50 hertz frequency. So question क्या आता है? Why dub sound is produced? It's due to the closure of the semi-lunar valves. Which of the two heart sound is of higher intensity, sharper and louder? You remember your second heart sound. Which sound is for longer duration? You remember the first heart sound. तो ये 3-4 types के questions हैं जो इस topic से आते हैं. That is very important. So in the class, we had learned about your cardiac cycle. So what is the time duration of a cardiac cycle? Who will tell me? Azan? 0.8 second. 0.8 second. Okay, very good. 0.8 second. So how this 0.8 second is distributed in order to complete the cardiac cycles. So what is the period of cardiac cycle that we will learn? अगर ये एक पूरा cardiac cycle का time period मुझे इसमें distribute करना है, तो I will divide it like this first. सबसे छोटा time period जो होता है, that is your arterial. पहले मैं लिख दूं ऊपर cardiac cycle. And the duration of cardiac cycle, you know, duration of cardiac cycle is 0.8 second. So the first column here, I will write atrial systole. It accounts for 0.1 seconds. It accounts for 0.1 second. Let me check in another color chalk in order to make it more clearer to all of you. Atrial systole, it accounts for only 0.1 second. Is it visible to all of you? Yes, ma'am. Yes. तो हमारा आर्ट्रियल सिस्टोली का मतलब ही होता है, सिस्टोल का मतलब होता है, हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कॉन्ट्रैक्शन, एंड डायस्टोल का मतलब होता है रिलैक्सेशन. तो जो टाइम पीरियड हमारा, जिस टाइम पीरियड में हमारा एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, दैट टाइम पीरियड इज 0.1 सेकेंड. नाउ कम्स वेंट्रिकुलर systole, and it accounts for, sorry, मेरे सारे पिंक चौक गिर जाते हैं, I don't know why. 0.3 second. Okay, and here I am writing joint diastole. The meaning of the joint diastole here is that both the atria as well as the ventricles, they are relaxing in this time period, and it accounts for 0.4 second. Okay, clear? So how we get it? So सबसे पहले we will write events of cardiac cycle. Events of cardiac cycle. ठीक है, अगर आप अपना बुकलेट देखने बैठोगे तो आप कंफ्यूज नहीं हो जाओ, इसलिए मैं आपको आपके बुकलेट के अकॉर्डिंग लिख के दिखा रही हूँ, क्योंकि फिर बहुत सारे बच्चे बुकलेट्स देख के सवाल पूछते हैं. तो इवेंट्स ऑफ कार्डियक
cycle. The way it's written in your booklet, I'm going to explain in that way how we get this. So first we will talk about the ventricular cycle. Both the ventricular cycle as well as the atrial cycle, it will account for a total of 0.8 seconds. दोनों में total 0.8 seconds का time लगता है. So when I talk about the ventricular cycle, the first thing I talk about the ventricular systole. So ventricular systole. तो वेंट्रिकुलर सिस्टोली कितना है 0.3 सेकेंड्स. तो अगर टोटल 0.8 होना चाहिए तो आपका वेंट्रिकुलर, क्योंकि हम जॉइंट की बात नहीं कर रहे, हम सेपरेट वेंट्रिकुलर डायस्टोल की बात करें, कितना होगा 0.8 minus 0.3, that means 0.5 सेकेंड. प्रतीक्षा, yes or no? Ventricular. Are you there, Pratiksha? Is 0.5 second. Have some patience. सब कुछ समझ में आ जाएगा कि इधर ये कैसे आया है. Now the second. We will talk about the atrial cycle. It will also account for 0.8 seconds. Ma'am, upper side is not visible. So here, first we will write your atrial systole, which accounts for 0.1 seconds. 0.1 second. So what will the time period of your atrial diastole? It will be 0.8 minus 0.1, that is 0.7 second. Clear? इतना सबको समझ में आ रहा है? Now, Yes, ma'am. the duration of total systole कितना है यहाँ पर? Duration of total systole, only systole I am asking. 0.3 plus 0.1, that is your 0.4, yes or no? 0.1, 0.3, 0.4, yes. So, total systole, time, duration for total systole is 0.4 second. तो बच्चा ये मुझे कैसे पता चला कि जॉइंट सिस्टोली कितना होगा? क्योंकि कार्डियक साइकिल ऑन अ होल 0.8 सेकेंड्स लेता है. ठीक है, तो अभी जॉइंट डिस्टोली का टाइम पीरियड क्या होना चाहिए? टोटल 0.8 और टोटल ड्यूरेशन ऑफ सिस्टोली इज योर 0.4. तो टाइम पीरियड ऑफ जॉइंट डायस्टोल क्या होगा? क्योंकि ये टाइम पीरियड ऑफ जॉइंट सिस्टोल है. जॉइंट सिस्टोल में अगर 0.4 सेकेंड लग रहा है और टोटल टाइम 0.8 सेकेंड्स लगता है, तो टाइम फॉर जॉइंट डायस्टोल विल बी 0.4 सेकेंड. डिड यू गेट इट कि ये मुझे कैसे पता चला? सो टाइम ड्यूरेशन फॉर joint diastole is also 0.4 second. 0.4 second. Relaxed part time जो होता है, relaxation time जो होता है, वो ज्यादा होता है. You can see here 0.5 and 0.7. ठीक है? So this is how the events of the cardiac cycle takes place. हमें joint सिस्टोली का टाइम पता है कि वो 0.4 होता है, तो हम वहीं से कैलकुलेट कर लेंगे कि जॉइंट डायस्टोली मतलब जिस टाइम पर दोनों ही एट्रिया और वेंट्रिकल दोनों ही रिलैक्स्ड हो. सेपरेटली वेंट्रिकल के रिलैक्सेशन का टाइम 0.5 सेकेंड है और सेपरेटली एट्रिया के रिलैक्सेशन का टाइम 0.7 सेकेंड है. बट एट ए टाइम जब दोनों रिलैक्स करते हैं वो टाइम पीरियड है 0.4 सेकेंड, and that is your joint diastole. Means
both atria and ventricles are relaxing. इससे क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ एट्रियल सिस्टोल, व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन, मतलब ऐसे डायरेक्ट नहीं आ सकता है, देयर मस्ट बी सम मिसमैच टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, मैच द फॉलोइंग हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, तो यू शुड नो कि एट्रियल सिस्टोल इज फॉर ओनली 0.1 सेकेंड, वेंट्रिकल सिस्टोल इज फॉर 0.3 सेकेंड, और हाफ जो है साइकिल, अगर इसको मैंने 0.4 इधर सिस्टोल के लिए दिया है, तो जॉइंट डायस्टोल इज आल्सो 0.4 सेकेंड। इस डायग्राम से रिलेटेड बहुत तरह के क्वेश्चन आ सकते हैं, जो मैं आज आप लोगों से शेयर करूंगी एक असाइनमेंट, और वो सबको करना है, और नेक्स्ट क्लास में हम वो असाइनमेंट डिस्कस भी करेंगे, तो जल्दी जल्दी नोट करो। यस बच्चा। मैम जो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल होता है वो 0.8 सेकेंड होता है, तो फिर वेंट्रिकुलर साइकिल का भी 0.8 सेकेंड एंड एट्रियल साइकिल का भी 0.8 सेकेंड, वो कैसे पॉसिबल? टोटल इसमें एक्टिव फेज भी है और रिलैक्सेशन फेज भी है, वो जब भी अब मैं कार्डियक साइकिल आपको एक्सप्लेन करूंगी ना, कि वो कि किस तरीके से आर्टेरियल सिस्टोल होता है, फिर डायस्टोल होता है, फिर वो थोड़ा रिलैक्स करता है, इजेक्शन फेज आता है, कुछ टाइम के लिए वो ब्लड इजेक्ट नहीं कर सकता है, बट उसका वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर जाता है, देन यू केम टू नो कि ये दोनों ही साइकिल्स में सिस्टोल और डायस्टोल जो है वो 0.8 सेकेंड्स के होते हैं, बट अगर हम टोटल बात करें 0.8 सेकेंड का टोटल डिस्ट्रीब्यूशन करें, तो हाफ द टाइम इज फॉर सिस्टोलिक एक्शन एंड हाफ द टाइम इज फॉर द डायस्टोलिक एक्शन टू प्रिपेयर द हार्ट इन ऑर्डर टू पंप द ब्लड अगेन। ओके, सो अभी जब हम इसके डिफरेंट स्टेजेस पढ़ेंगे वहां पर आपको समझ में आएगा, जैसे अभी मैंने बताया कि ये जो कि ये वाल्व्स जब ये बंद होते हैं तो ये भी कार्डियक साइकिल के टाइम पे बंद हो जाते हैं, तो इनिशियली द फ्लो ऑफ ब्लड इज वेरी स्लो, तो फ्लो ब्लड होते रहता है, बट वहां पर ना ही कॉन्ट्रैक्शन होता है उस टाइम पे, इस वजह से जो साइकिल है, इस वजह से जो एट्रिया और वेंट्रिकल है वो रिलैक्स्ड फेज में रहते हैं, इसीलिए आप देखो कि रिलैक्सेशन टाइम इज मोर, यू कैन सी हियर रिलैक्सेशन टाइम इज more as compared to the contraction time। अभी ये अच्छे से आपको क्लियर हो जाएगा जब मैं 1 by 1 आपको ये पूरा एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ठीक है मैम? सो फिर जो ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल है वो 0.16 वो सेकेंड सेकेंड ही होता है। यस, द ड्यूरेशन ऑफ योर कार्डियक साइकिल इज 0.8 सेकेंड। एक सेकेंड में सिर्फ एक कार्डियक साइकिल होता है, दैट कंसिस्ट ऑफ 1 कॉन्ट्रैक्शन एंड 1 रिलैक्सेशन। कार्डियक साइकिल का मतलब है 1 systole, 1 diastole. That means 1 contraction and 1 relaxation. Please confuse मत हो, अभी जो मैं आगे एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसमें आपको ये समझ में आ जाएगा कि मैम ने इधर इतना इतना क्यों लिखा था, कि वो इसका मतलब है कि जब भी वो पूरा 0.8 सेकेंड का टाइम हो और वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, उस समय एट्रिया में क्या हो रहा है, गेटिंग माय पॉइंट, उस समय एट्रिया रिलैक्स स्टेज में है, तो वो उसका रिलैक्सेशन टाइम है। तो लेकिन हम जॉइंट डायस्टोल देखेंगे कि वैसा फेज जब ये दोनों ही रिलैक्स्ड स्टेज में, वो 0.4 सेकेंड का टाइम होता है। वो हमने कैसे फाइंड किया, अगर सिस्टोल का हमें पता है कि 0.4 होता है और टोटल टाइम ड्यूरेशन 0.8 है, तो आपका जॉइंट डायस्टोल क्या होगा, वो भी 0.4 सेकेंड होगा। ओके, गिव मी सम टाइम, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मैम यस, मतलब वेंट्रिकुलर साइकिल और एट्रियल साइकिल है वो दोनों साथ में नहीं होते हैं, सिर्फ जॉइंट डायस्टोल साथ में होता है, इसलिए उनका टाइम अलग, मतलब 0.8 सेकेंड दिया है दोनों का, राइट? हम पढ़ेंगे एट्रियल सिस्टोली, फिर पढ़ेंगे एट्रियल डायस्टोली, फिर पढ़ेंगे वेंट्रिकल सिस्टोली, वेंट्रिकल डायस्टोली, और इसके बीच में जो वेंट्रिकल का सिस्टोल और वेंट्रिकल का डायस्टोल है वो थोड़ा लॉन्गर टाइम चलता है, उसमें ज्यादा एक्टिविटीज होती है, इस वजह से देखो कि उसका सिस्टोल टाइम भी ज्यादा है, दिख रहा है
सिस्टोल टाइम ज्यादा है, बट Yes, ma'am. एज कंपेयर टू द एट्रियल डायस्टोल उसका रिलैक्सेशन टाइम जो है वो कम है। ये सब आपको अभी समझ में आएगा। लेट मी एक्सप्लेन, मैं कह रही हूँ ना, हैव सम पेशेंस, समझ में आ जाएगा कि क्यों ये टाइम पीरियड में डिफरेंस है। ओके सो जब भी हम Yes, कार्डियक ma'am. साइकिल्स पढ़ेंगे वहां पर हमें 2-3 चीजों का ध्यान रखना है। बेसिक प्रिंसिपल, the first basic principle that you have to remember is blood flow from higher to lower pressure. हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ फ्लो करेंगे। एट्रिया में जैसे ही ब्लड वेना कावा के थ्रू आने लगा, एज वेल एज राइट एट्रिया में एज वेल एज द लेफ्ट एट्रिया में थ्रू द पल्मोनरी वेन्स, द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड्स आर ओपन and the blood starts going to the ventricle. But as soon, क्योंकि हायर से लोअर प्रेशर की तरफ जा रहा है, but as the pressure in the ventricle starts, the ventricle contracts, क्योंकि साथ में हमारा इम्पल्स भी फॉरवर्ड हो रहा है फ्रॉम एसए नोड टू एवी नोड। एवी नोड के पास जैसे ही आया, योर वेंट्रिकल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्टिंग। जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होने लगेगा, द टू valves, that is the tricuspid and the bicuspid valves, they close. इनिशियली वेंट्रिकल का प्रेशर इतना ज्यादा नहीं होता है कि वो डायरेक्ट पल्मोनरी वेन्स और पल्मोनरी ट्रंक एज वेल एज मेन एरोटा में ब्लड को पंप कर सके। तो वहां पर एक स्टेज होता है जब भी उसका ब्लड का जो वॉल्यूम होता है वो कांस्टेंट होता है, बट वेंट्रिकल्स के वॉल कॉन्ट्रैक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। मतलब अभी पूरा कॉन्ट्रैक्शन नहीं हुआ है, वो इनिशियल फेज है। तो लेट मी रब दिस एंड आई विल एक्सप्लेन ईच ऑफ द स्टेप्स वन बाय वन। ओके, बट आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होना चाहिए कि ये डिपेंड करता है प्रेशर इन द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट। व्हाट इज द प्रेशर इन द चेम्बर्स ऑफ द हार्ट? एंड ब्लड फ्लोज फ्रॉम हायर प्रेशर टुवर्ड्स द लोअर प्रेशर। ओके, ये दो चीज आपको याद रखनी है कि एक तो हमारे प्रेशर का है, और जैसे ही प्रेशर इंक्रीज करेगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्शन। प्रेशर डिक्रीज करेगा तो क्या होगा? रिलैक्सेशन। ठीक है, ये 2-3 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। और जैसे ही प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा, डिफरेंस इन प्रेशर ग्रेडियंट क्रिएट होगा कि आर्टरी का बहुत लो हो गया, वेंट्रिकल्स का बहुत ज्यादा हो गया, इट क्रिएट्स अ प्रेशर ग्रेडियंट एंड द वाल्व्स विल बी क्लोज्ड। These are the three basic principles on the basis of which your cardiac cycle depends. ठीक है, मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा समझ में आया होगा। धीरे धीरे मैं जैसे एक्सप्लेन करूंगी पूरा समझ में आ जाएगा। So first, write it down, the basic principles on which the cardiac cycle depends. क्या हमारे basic principles हैं? Basic principles. The first principle is blood flow from higher pressure to from higher to lower pressure. Blood flow from higher to lower pressure. Contraction increases pressure. Contraction increases pressure. Relaxation, this is decreases pressure. Is this color of the chalk visible? Yes. Yes, ma'am. Okay. And the third one is the difference in the pressure. That means the pressure gradient. Valve open and close according to pressure gradient. Valves open or close according to pressure gradient.
ये 3 फैक्टर्स हैं, बेसिक प्रिंसिपल हैं, जिसके ऊपर आपका पूरा का पूरा कार्डियक साइकिल डिपेंड करेगा। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे द फर्स्ट, दैट इज द एट्रियल सिस्टोली। एट्रियल सिस्टोली, ठीक है। एट्रियल सिस्टोली, तो द एट्रियल सिस्टोली में क्या होगा? द वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन stimulated by the SA node. The wave, क्योंकि systolic reaction होना है, contraction होना है, for this you need the wave of contraction, and that is stimulated by the SA node. That means the atria contract. Why the atria contract? Due to excitation of the SA node. तो जैसे ही हमारा SA node excited हो जाएगा, the wave of contraction starts in the atria. The atria contracts due to wave of contraction stimulated by the SA node. आपको पता है कि SA node is situated on the left side of the wall of the right atrium, और वहां से हमारा wave of contraction start होता है. So this wave of contraction किसने stimulate किया है? Stimulated by SA. बहुत जगह आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा, SAN. This is your SA node. Okay. Now जैसे ही कॉन्ट्रैक्शन हुआ, हमने क्या पढ़ा कि कॉन्ट्रैक्शन क्या कर रहा है? प्रेशर को इंक्रीज कर रहा है। और हमने क्या पढ़ा कि प्रेशर पे डिपेंड करता है हमारा ब्लड का फ्लो, यानी कि हाई प्रेशर से वो लो प्रेशर की तरफ जाएगा। दैट मींस वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। दैट मींस द प्रेशर इन द एट्रिया इंक्रीजेस। एट्रिया में प्रेशर इंक्रीज हो गया due to contraction, and the basic principle is that the blood flow from higher pressure to lower pressure. तो यहाँ high pressure है, तो from the atria the blood will flow towards the lower pressure, that is the ventricles. That means both the tricuspid and the bicuspid valves are open and the blood is forced into the ventricle. So atria का प्रेशर ज्यादा है, वेंट्रिकल का प्रेशर कम है। अब समझ में आ रहा है धीरे धीरे? तो अब हमारा ब्लड हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ जाएगा, बट ब्लड को फोर्सफुली भेजने के लिए क्या चाहिए? बोथ द इंटर ऑरिकुलर वेंट्रिकुलर वाल्व्स जो है, दैट इज द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व, वो दोनों ओपन हो जाएंगे। सो बोथ द वाल्व्स ओपन and they allow the flow of the blood from the high pressure that is present in the atria due to contraction. और ये contract क्यों करेगा? Due to the stimulation of the waves by the SA node. तो अभी ventricles की तरफ हमारा blood flow करना start करेगा। तो क्या हो गया? एट्रियल सिस्टोल, बहुत छोटा सा 0.1 सेकेंड का टाइम था कि contraction start हुआ, contraction की वजह से high pressure हुआ, and the principle is that the blood flow from higher pressure to the lower pressure. Now the blood from the atria will be transferred towards the ventricles. दोनों ही तरफ आएंगे, क्योंकि हमारे राइट एट्रिया और लेफ्ट एट्रिया दोनों में ब्लड कहाँ से एंटर कर रहे हैं? From the vena cava and from the pulmonary veins. Now by the wave of the SA node की वजह से contraction हमारे राइट एट्रिया में भी स्टार्ट हो गया, एंड बैचमेंस अगर आपको याद होगा तो लेफ्ट एट्रिया में भी स्टार्ट हो गया, एंड द ब्लड इज पुश्ड थ्रू द वाल्व, दैट इज द बाइकस्पिड एंड द ट्राइकस्पिड वाल्व्स टू द वेंट्रिकल्स। इतना सबको समझ में आया? यस और नो? मधुरा, सिद्धि, वेदांत, सब सो रहे हैं क्या?
वेदांत जगा हुआ है. सिद्धि, व्हाट अबाउट यू? संकेत? Yes, ma'am. ओके, इतना सबको समझ में आ गया कि हमारा एट्रिया जो है वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया. नाउ अभी ब्लड किधर चला गया? वेंट्रिकल्स में. मैं दो तरीके से बताऊंगी. पहले सिंपल वाला तरीका बताऊंगी, फिर हमारे जो बुकलेट में दिया है ना वो आपको कंफ्यूज ना करे, इसलिए मैं बुकलेट के हिसाब से भी बताऊंगी. बट जैसे ही सिंपल समझ जाओगे बुकलेट का समझ जाओगे. ठीक है. सो आफ्टर एट्रियल सिस्टोली द ब्लड अभी हमारा वेंट्रिकल के तरफ मूव कर गया. So the second phase will be the beginning of ventricular systole. Beginning of, देखो मैं वर्ड यूज कर रही हूँ beginning. अभी शुरू हो रहा है. ठीक है. अभी वो ब्लड इजेक्ट नहीं कर सकता है. ठीक है. यहाँ दो फेज में डिवाइड है क्योंकि तभी तो वो लंबा है. 0.3 सेकेंड्स लगता है. First is your beginning of ventricular systole and second is your complete ventricular systole. Beginning you all have written in your own words कि atrial systole में क्या हो रहा है. Write in your own words. जब फिर से रिवाइज करने बैठोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मैम ने ये कैसे बताया. Beginning of ventricular systole. So, beginning of ventricular systole. Now, the wave of contraction is being transferred from the SA node to the AV node. अभी जो ventricle भी contact करना start करेगा क्योंकि ये beginning of contraction of ventricles है. So the ventricles begins to contract due to wave of contraction stimulated by AV node. और जैसे ही वेव ऑफ कॉन्ट्रैक्शन स्टिमुलेटेड बाय द एवी नोड आएगा तो वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा. कॉन्ट्रैक्ट जैसे ही क्यों कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो इसका प्रेशर बढ़ेगा. प्रेशर बढ़ेगा तो वो ब्लड फिर से एट्रिया में मूव नहीं कर जाए, बैकफ्लो नहीं हो जाए. बोथ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वाल्व्स दे close and they produces the first heart sound. And what is the name of the first heart sound? Love. ठीक है. तो जैसे ही हमारा वेंट्रिकल सिस्टोल हो रहा है, क्या लिखा था मैम ने लब के लिए, फर्स्ट हार्ट साउंड के लिए? इट शोज द सिस्टोलिक फेज. याद आया? यस और नो? प्रवीण, श्लोक, यस और नो? संकेत. So what happens in the beginning of ventricular systole? The ventricles begins to contract due to wave of contraction stimulated by the AV node. The bicuspid and the tricuspid valves shut down or closed and it produces the first heart sound. Closed and produces the first heart sound. ठीक है. Due to wave of contraction stimulated by AV node. Stimulated by AV node. Stimulated by, जैसे यहाँ लिखा है stimulated by ऐसे नोड, ऐसे यहाँ भी लिख लो stimulated by AV node. सेम रहेगा तो बार बार सेंटेंस चेंज नहीं हो रहा है. बाय AV node. तो ये वेंट्रिकल में सिस्टोली स्टार्ट हो गया है. इसका एक दूसरा नाम भी है जो मैं कल के क्लास, मतलब अभी नेक्स्ट क्लास जब भी होगा वहां जस्ट अ मिनट. So in the beginning of ventricular systole, what happens? आपका वाल्व क्लोज हो जा रहा है, बट यहां से अभी हमारा ब्लड जो है वो इजेक्ट नहीं हो रहा है टुवर्ड्स द एरोटा और टू द पल्मोनरी ट्रंक. तो हमारा जो वेंट्रिकल का सिस्टोली है वो थोड़ा लंबा प्रोसेस है एज कंपेयर टू द एट्रियल सिस्टोली, क्योंकि इसमें 0.3 सेकेंड्स लगता है और वो सिर्फ 0.1 सेकेंड्स में कंप्लीट हो गया.
तो जो ये स्टेज है बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोली, इसको अगर आप किसी दूसरे बुक्स में, वैसे दूसरा बुक देखने की जरूरत नहीं है, अगर मॉड्यूल ओपन करोगे तो कंफ्यूज मत होना. दिस स्टेज ऑफ बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोली इज बीइंग डिफाइंड एज your isovolumetric contraction in your booklet. इसको isometric contraction भी बोलते हैं या फिर isovolumetric contraction भी बोलते हैं. तो प्लीज 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 कंफ्यूज मत होना. बार बार जब पढ़ने बैठोगे तो मेरे पास बार बार मैसेजेस आएंगे जैसे MA1 और MA2 का आता है. तो बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोली ही जो स्टेज है इसी को हम बोलते हैं, राइट इट डाउन, आइसोमेट्रिक contraction. And the other one, other नहीं, isometric आपको आपकी बुकलेट में मिलेगा, बट इसी आइसोमेट्रिक को हम आइसोवॉल्यूमेट्रिक भी बोलते हैं, isovolumetric contraction. And this is the first stage of the ventricular systole. This is the first stage of ventricular systole, which is also known as isometric contraction or isovolumetric contraction. Please write it down. Note kar lo. This beginning phase of ventricular systole is also known as isometric contraction or isovolumetric contraction. अगर नहीं अच्छे से समझ में आया तो नेक्स्ट क्लास में फिर यही से स्टार्ट करूंगी, बिगनिंग ऑफ वेंट्रिकुलर सिस्टोली. ओके? Yes, ma'am. ओके.